Everyone, my name is Siddharth and welcome to the special segment of interviews at Quick Learning Sports. So today we have the third session with IKF or India Khelo Football. We have Nirja Shekhawat. Nirja Shekhawat is an engineer turned sports operational leader whose passion for football has driven her remarkable career. She began her professional journey at Volkswagen before diving into the world of sports with IKF. Within just 3 years, she rose to position of national operations head, overseeing Asia's largest talent hunt in football. So let's dive into her interesting journey and let's talk to her. Hello, Nirja, कैसे हैं आप? How are you doing? Hey, hi Siddharth. I'm doing good and thank you for this amazing platform and the introduction. No worries. And Nirja, I'm very excited to talk about you and your journey at IKF because uh, सबसे पहली बात तो आईकेएफ जो काम कर रहा है वी आर रियली थैंकफुल एंड वी आर रियली इंस्पायर्ड बाय द जर्नी ऑफ इंडिया खेलो फुटबॉल और उसमें आपने आपका जो योगदान है बहुत अच्छा रहा है लेकिन हम आईकेएफ के बारे में और आपके बारे में जानेंगे बट उससे पहले सबसे पहला सवाल आता है व्हाई इंजीनियरिंग. Uh, Good question. But again, thank you for actually making sure कि India Khelo Football की story is being circulated among your listeners and I hope to the entire nation, या world as well. या But yeah, to start with, why engineering? Um, So I wanted to serve the nation. I wanted to serve the people, and I wanted to join the armed forces. ओके. And since my childhood, it was very clear to me this is what I want to do, and हम्म. yahi karna hai. So I wanted to join the armed forces as an engineer. राइट. And my entire life, I was fascinated by two things. Either हम्म. it was army or हम्म. it was getting into, any kind of on-ground job. I didn't want to do any kind of desktop job हम्म. since inception of my childhood. हम्म. And that is when I realized that engineering is something that I should do. Definitely, it will expand the knowledge of my हम्म. horizon of my knowledge. हम्म. And apart from that, army was something that I felt matched the vision that I wanted to, pursue in my life, which राइट. is to definitely make an impact, serve the nation, serve the हम्म. people. राइट. And yeah, hence, as an engineer, I wanted to join the forces. गॉट इट. तो आपने इंजीनियरिंग लाइक मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज आप करना चाहते थे तो इज इट बिकॉज आपका बैकग्राउंड है फैमिली बैकग्राउंड है या आपने लोगों को देखा है आसपास के लोगों को ये स्पार्क कहाँ से आया? So yes, my dad, my father, he is currently he's retired, but हम्म. he was in CRPF. ओह He नाइस. retired as an IG from CRPF, and this has been a culture in our family. Like गॉट इट. almost all my cousins and all हम्म. my family members had been there in the field of armed forces, राइट. and probably वो होता है ना कि खून में आ ही जाता है eventually. तो वो चलते 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 एट द एंड ऑफ राइट. माय यूथ आई रियलाइज दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू. गॉट इट. फिर उसके बाद ये स्पार्क कैसे आया कि भाई चलो अब फुटबॉल या फिर स्पोर्ट्स में चलते हैं? आई नो देर इज अ बैकग्राउंड लाइक द फॉर द प्रिपरेशन यू हैव टू बी फिजिकली फिट, यू हैव टू बी इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स एंड मतलब थोड़ी सिमिलैरिटीज हैं आर्मी लाइफ और स्पोर्ट्स लाइफ में बट देन व्हाट वाज दैट पॉइंट कि आपने सोचा कि चलो स्पोर्ट्स में लेट्स सर्व इनटू स्पोर्ट्स? Yeah, so for me, again, it was very simple. While I was pursuing, for SSB, मुझे पता है entrance हम्म. exam है, देने पड़ते हैं. It takes time, it requires patience. And मुझे हमेशा से ये clear था कि rather for me and my family, we had a very open discussion about this कि you should always have a backup. राइट. And for me, like I said, I was always fascinated by doing something on ground. I was never a desktop person. हम्म. That I knew for sure. And that's when I realized that it's time to, apart from preparing for army, giving interviews, SSBs, and हम्म. all of these things, I realized कि एक और कुछ course होना चाहिए because I was just a graduate when I did my engineering.
and I felt that there was a need of doing some other academic course as well that would add on to my knowledge, Hmm. and rather add on to my CV as well. Hmm. So I decided to pursue. I was fascinated by event management, Hmm. operations, Okay. sports operations, rather media operations, and all Hmm. these things. So while I was preparing for army, I decided I'll take a PGDM course, and why not explore that as well. Right. So while I was getting into the field of sports operation, I knew कि ठीक है ये आर्मी का preparation चल रहा है, अब मैं कर रही हूँ, तो I can separate out थोड़ा सा time for Hmm. myself to Hmm. again like expand the horizon of my knowledge. Hmm. That's when I decided to go for a proper course, like a Okay. PGDM course that I wanted to pursue. So, yeah, and I think that's when I started the course, and suddenly उसी time पे I knew कि ठीक है चलो course तो हो ही रहा है, but I need to get a hands-on experience as well, Right. right? ऐसा तो Right. होगा नहीं कि course होते ही मुझे कुछ मिल जाएगा. Hmm. So I just decided कि हाँ ठीक है, let's get some internship experience as well. Hmm. And that's when I came across the internship for India Khelo Football. Hmm. That's how I leaped into sports operations Hmm. management. Got it. Great. And so, what was your first interaction with India Khelo Football, and how was it? So, so I scored the internship on Internshala, Okay. and I went through a proper interview process, and luckily for me, the at that point of time, India Khelo Football had also just started, and Hmm. they were also looking for some interns who would be, sharing similar kind of vision at least. And it was clearly mentioned, like it's a non-profit organization, Hmm. it's a platform that is, Right. is being created for players to be become a how to become a professional football player. It's just for them. Right. एंड आई रियलाइज कि ठीक है यार, मतलब अभी तक तो सब सही लग रहा है, तो विजन अगर मैच हो गया तो इट शुड बी फाइन. सो इन Right. माय इंटरव्यू again it was reiterated कि this is our vision, this is what we are doing, this is the scale of India Khelo Football, and this is what we will be doing. Hmm. And I was totally impressed because, again, initially, when I wanted to do something, it was to make sure that I am making some kind of an impact Hmm. for the Hmm. nation, for the Hmm. people who are around me, and that is what attracted me towards India Khelo Football. क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं विजन को मैच कर पाऊंगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, then I'll be able to provide my level best Right. in order to sustain myself and the organization. So again, in while I was interviewing for the internship, I realized that our visions has aligned. Hmm. Scale of operations is huge here, and football, technically, which is as of now, is currently not as tapped sport in India as the other sports. So yeah, I think that's what made me choose India Khelo Football as well. Got it. तो आपने बोला आपके visions align हुए and there was a proper match. But when you entered into India Khelo Football, पहला दिन या फिर पहले स्टार्टिंग के 6 महीने कैसे थे? लाइक क्या क्या प्रॉब्लम्स आई? फर्स्ट ऑफ ऑल वो अर्ली डेज थे आईकेएफ का, आई थिंक उस समय तो बहुत ही कम लोगों को पता होगा आईकेएफ क्या है. तो क्या क्या परेशानी आई स्टार्टिंग के 6 महीने और लेट्स से 1 साल? और जो ऑपरेशंस होते थे ऑफ कोर्स उसमें इतना स्ट्रीमलाइन प्रोसेस नहीं होगा, राइट? तो उन 6 महीने 1 साल में आपने क्या परेशानियां देखी फर्स्ट जब ज्वाइन किया आपने? So, starting with when I initially joined India Khelo Football, definitely it was an organization जो एक बहुत ही nascent stage पे थी. राइट. And with my career in the sports हम्म. operations management, even I was at a very nascent stage. राइट. So the major challenge that I faced was कि अभी कहीं पे भी मैं जा रही हूँ किसी भी कोलैबोरेशन के लिए या किसी भी पार्टनरशिप के लिए, it's important that my work speaks for me and for my organization.
right, क्योंकि अभी तक वो लेवल आया नहीं था कि अभी ऑर्गेनाइजेशन इज नोन तो सब कुछ इजीली हो जाएगा, right, या पीपल right. और ब्रांड्स और एनीथिंग वुड कम ऑन बोर्ड दैट इजीली. सो आई रियलाइज कि आई हैव टू प्रूव माई एफर्ट्स एंड माई वर्क and my organization's work as well. And that's when I realized कि ये initial जो phase होता है, it's important to set the processes right. And in order to make sure कि आपके processes are in place, it can be only done when you have a vision, Hmm. when you have a good team to Good team. implement those vision, and Hmm. when you have like-minded people who are there to be with you and work in the ecosystem. Hmm. So these things were very clear to us because, thankfully, to our co-founders who have been in. I believe you have already spoken to Mr. Hitesh Joshi, and we Hmm. have another co-founder. His name is Mr. Funny Bhushan. So I was closely working with the founders, and it was pretty clear to us how we need to reach to our goal. Hmm. And hence we set the process and the SOPs in a certain manner कि जिसमें हमें पता था कि हाँ इस तरीके से लेके जाएंगे तो we will of course hit and trial run बहुत हुए हैं. Hmm. Hmm. मतलब Hmm. मैं नहीं कहूंगी कि एक प्रोसेस सेट हो गई वही प्रोसेस आगे तक चली. I mean it's been 4 years and we are Hmm. still collaborating and Right, identifying new ways to make sure कि how to make this platform even better. right, Every year we do that. right, So yeah, I mean, challenges, like I said, nascent stage पे तो थे right. काफी, Process set but करने के challenges थे, right. And exactly. team. तो क्योंकि उस समय स्काउटिंग के बारे में ज़्यादा मतलब स्काउटिंग के बारे में अभी भी बहुत लोगों को नहीं पता है. और दैट्स व्हाई आई मीन आई एम ऑलवेज पुशिंग फॉर दिस इंटरेक्शन विद इंडिया खेलो फुटबॉल ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाने स्काउटिंग को. उस समय जब आप किसी को स्काउटिंग बोलते थे तो क्या उनका क्या रिएक्शन होता था? So ये काफी बार हुआ है. I mean, I'm sure you would have covered this question with Nimish as well. Yeah, yeah. Yeah, so again, scouting as a term is new. Uh, at least the young generation, who are into esports, they know what scouting is. They have Right. been playing Dota. They know Wow. कि scouting क्या होता है through Nice. e-games. But to get into, it into the football industry, Hmm. uh, to making sure कि हमारा एक जो concept है where we are providing, we have our own certification. We Right. have our own certified scouts who are, Hmm. finding the talent. तो ये कंसेप्ट बहुत न्यू था इंडस्ट्री में. बट अगेन लाइक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन वी स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग what is the difference between a coach and a scout, Hmm. why a certification is necessary, rather why a course is necessary in order to become a scout, या फिर वो कोर्स होना कैसा चाहिए, वो डेवलप कैसा होना चाहिए. तो these things were again same, like the processes were set for it. हम लोगों ने भी over the period of time, over a period of 2 years, I think we started ensuring कि ये जो scouting certification है ये होना क्या चाहिए, Hmm. why it's important, Hmm. कोई scout क्यों बनेगा, and Hmm. क्या opportunities है that comes with being a scout, and or Hmm. what are the responsibilities that comes when you Hmm. are a IKF partner scout. तो again same thing, processes definitely help, and over a period of time ये change आया जो ये Okay. आया. But similarly लोगों को भी उसकी awareness आनी चालू हो गई because Hmm. thanks to Nimish, our technical head, who have Hmm. been making sure कि ये course जो है it reaches to Hmm. maximum number of people, Maximum people. Hmm. and actually जो passionate football players है who couldn't pursue it Right. as a profession, Hmm. they are like mad about it. Oh, I mean, to interesting. support the football ecosystem in any possible way, Hmm. who is a football lover will be, very they do love it because we have a good partner scout as of Hmm. now. We have good network of partner scouts pan India. So yeah. How many partner scouts have you like created until now, like last 4 season? I think we have a good network of 100 plus scouts as of Wow. now, and Wow. these are the scouts who are not full-time scouts. They Hmm. have their own, Work, profession. day, weekday jobs, Hmm. Hmm. and this is something that they are doing out of passion. Wow. So, That's really uh, nice.
Yeah. So they are not exactly, they are not doing it to earn out of it. Rather, they are doing Hmm. it passionately to support Indian For the football ecosystem. cause. Yeah, for the Yeah, cause. yeah. Nice. So let's come back to uh, IKF about the stories. Let's hear out those stories which have been very motivating to you every day, every year. Like कुछ तो ऐसा होता होगा ना हर दिन, या फिर मतलब ऐसी स्टोरीज देख के कि लगता है कि हाँ चलो ये काम तो अब करना है, इसको और स्केल अप करना है। तो ऐसी एक दो स्टोरीज आप बताएं व्यूअर्स को, लिसनर्स को, जो कि इंडिया खेलो फुटबॉल में आपने देखी या होती हैं, तो उससे आपको रोज मोटिवेशन मिलता सो आई थिंक ये मैं सिद्धार्थ, आई वुड लाइक टू लिंक इट अप इन टू डिफरेंट मैनर्स। एक है जो मेरे एक्सपीरियंस है, है। और राइट। एक है जो मेरी लर्निंग्स है अभी राइट। तक। तो टॉकिंग अबाउट माय एक्सपीरियंसेस सो हम्म। फार, ऑनेस्टली जर्नी हैज बीन फिनोमिनल। मतलब हम्म। मैं शायद डिस्क्राइब ही नहीं कर पाऊँ। मतलब ये सेशन उतना बड़ा नहीं है जितनी मेरे पास जर्नी की स्टोरीज है ओवर दीज 4 years। बट हाँ, ठीक है, लेट मी स्टार्ट विथ वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस दैट आई हैड ड्यूरिंग दिस करंट सीजन। हम्म। सो सीजन 4 में इंडिया खेलो फुटबॉल डिसाइडेड कि चलो ठीक है, फुटबॉलिंग नेशन बनाना है। हम्म। कहाँ फुटबॉल है ये अपन को पता है, हम्म। लोगों के अकॉर्डिंग किस पार्ट ऑफ नेशन में फुटबॉल नहीं है ये भी हम्म। लोगों को पता है। हम्म। बट इज इट ट्रू कि उस पार्ट ऑफ इंडिया में फुटबॉल नहीं खेल रहे लोग? हाउ डू वी आइडेंटिफाई दैट? हाउ डू वी हम्म। जस्ट बिलीव दैट ये तो किसी ने बोल दिया है, बट हम्म। कोई रिटन टेक्स्ट तो है नहीं कि हाँ हम्म। नहीं मिलेगा फुटबॉल प्लेयर? हम्म। सो दैट्स व्हाट वी डिसाइडेड फॉर दिस सीजन, टू मेक श्योर कि इंडिया को एक फुटबॉलिंग इंक्लूसिव नेशन बनाते हैं, हम्म। to explore the states and districts which are non-footballing ओके। districts. So ये सोच के we had identified a few pockets. हम्म। So I'll start with Rajasthan का story. So in Rajasthan only we had decided to go deeper हम्म। with this season, and we had gone to I and our IKF partner scout, Mr. हम्म। Sanket Goswami. हम्म। We ourselves drove down entire Rajasthan. We covered around 3,000 kilometers, and वाओ। we went to a few districts. And now अभी ये डिस्ट्रिक्ट्स तो जाना है, हमें पता है अभी इस डिस्ट्रिक्ट में पहुंचना कैसे है, हाउ टू राइट। फाइंड राइट पर्सन और राइट पीपल. सो वी हैव आवर ओन रीजनल एग्जीक्यूशन पार्टनर का नेटवर्क राइट। हु हैव अ सिमिलर विजन एज आई के हैव, कि हाँ ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड करियर पाथ बनाना है फॉर फुटबॉल प्लेयर्स. हम्म। तो similarly, our regional execution partner for Rajasthan is Mr. Rohit, and हम्म। he is the co-founder of Sport on Sports. Now, he got us connected to various schools and हम्म। various partners there. तो हमने लोकेशंस आइडेंटिफाई किए. नाउ आई स्पेसिफिकली स्पीक अबाउट वन लोकेशन, श्री गंगानगर. सो हम्म। श्री गंगानगर में वी वर एबल टू कोलैबोरेट विथ मयूर स्कूल ऑफ श्री हम्म। गंगानगर, and we were able to host a trial specifically for the players of Sri Ganganagar and the nearby districts. राइट। स्कूल की तरफ से प्रॉपर मार्केटिंग हो रही है, हमारी तरफ से प्रॉपर मार्केटिंग हो रही है कि बच्चों को पता चले कि ऐसा कुछ टैलेंट हंट होता है। प्रोग्राम हो हम्म। रहा है. हम्म। तो ये टैलेंट हंट प्रोग्राम के लिए हमारा आइडिया ये रहता है कि आइडिया है कि एक ट्रायल ऑर्गेनाइज हो रहा है. हम्म। उस ट्रायल में एनी वन हु फॉल्स इन आर एज ग्रुप, अभी के हम्म। लिए जो करंट एज ग्रुप इज 2007 टू 2013 born, 11 टू 17 years old. तो ये प्लेयर्स जो हैं इस ट्रायल में आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं. दे कैन showcase their talent to our partner scout. If you get shortlisted at the city trial, you go to the zonal round, and again zonal के बाद आप सीधा national में जाते हो. नेशनल्स। या। And national final is where all the ISL I League clubs or the top हम्म। academies who have partnered with IKF, हम्म। they come and scout the players for their own ecosystem. राइट। So first we had to explain this to the school कि हम क्या कर रहे हैं, and हम्म। why it's important to get this हम्म। platform into Sri Ganganagar as well. And the idea was कि अभी श्री गंगानगर में as of now कोई ट्रायल हुआ ही नहीं है आज तक. वाओ। अभी टूर्नामेंट्स आई एम श्योर सबको पता है क्या होता है. Again, to explain them the concept, or explain the players or the parents the concept of IKF trials, 100 city talent hunt program, why we are doing it, was again very important. So इस experience में I figured out कि आप कहीं भी चले जाओ, you have to make sure कि जो आपका
माइंडसेट है, जो हम्म थॉट प्रोसेस है अबाउट हम्म द इंटायर इनिशिएटिव, हम्म ये आपको पहले से उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एंड बिलीव मी ऑन दिस, ये हार्डेस्ट बिट नहीं था। राइट People could easily align with our vision. People could easily identify कि हाँ, why not? I mean, it's such a great initiative and idea भी बहुत अच्छा है. Let's go ahead with it. So सेम चीज हुई एंड वी वेंट इनटू श्री गंगानगर। अभी ट्रायल डे है, ट्रायल डे के दिन देर आर प्लेयर्स। नाउ देर इज वन प्लेयर आई वांटेड टू स्पीक पर्टिकुलरली अबाउट, जिसके साथ मेरी कॉन्वर्जेशन हुई थी। अभी गर्मी का टाइम है, हम्म द ग्राउंड इज लाइक द वेदर इज 48 हॉट, ग्राउंड डिग्रीज तप और रहा है। टिपिकल थैंकफुली इट वाजंट दैट बैड बैक ओके देन, बट हाँ, वो ग्राउंड तप रहा है। अभी मुझे पता है कि चलो ठीक है, स्काउट इज देयर, वो अपने उसमें स्काउटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। आई सी अ प्लेयर, उसने शूज नहीं पहने, ओ and he was about ye high. I mean, probably he was, I think back then he was 11 years old or 12 years old. So मैंने उसको पूछा कि बेटा, यू आर नॉट अलाउड, ऐसे नहीं खेल सकते हो, इंजरी हो सकती है। सो मैंने बोला मैं आपके लिए बूट्स अरेंज कर दूंगी, इट वोंट बी एन इशू। ही सेड कि मैम, मैं बूट्स पहन के खेल ही नहीं पाऊंगा, मैंने आज तक शूज पहन के नहीं खेला है और मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाऊंगा। मैंने बोला आपको ट्राई भी नहीं करना, आर यू श्योर? लकीली हिज गार्जियन वाज आल्सो देयर। ही सेड कि नहीं, उसका आई डोंट वांट टू डू दिस, उसको खेलने दो, वो जैसा खेलता है। कुछ इंजरी होगा हम देख लेंगे, आप उसका टेंशन मत लो। सो आई वाज लाइक ठीक है, अभी क्या बोलूं। देन दिस प्लेयर, ये प्लेयर आके, इतना सा बच्चा, ही वाज प्लेइंग इन हिज एज कैटेगरी एंड ही वाज डूइंग मार्वलसली यार, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितना। सो आई रियलाइज कि कौन बोलता है यार कि रॉ टैलेंट नहीं है वहां पे। अगर कोई बच्चा रोज खेल रहा है बिना शूज के, ही इज कंफर्टेबल इन प्लेइंग, क्योंकि फुटबॉल इज अ स्पोर्ट जहाँ पे आपको, यू डोंट नीड एन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्लेइंग राइट फुटबॉल। यू कैन गली में भी खेल सकते हो, एक कहीं भी बॉल खेल चाहिए यार बस। एग्जैक्टली exactly. तो वो बच्चा जब खेल रहा था, आई रियलाइज कि नीश अगर क्रिएट होगी तो बच्चों को प्लेटफॉर्म मिलेगा, राइट? अगर राइट प्लेटफॉर्म ही नहीं है तो वो बच्चा शोकेस कहाँ करेगा टैलेंट, या वो सही किस बात चीज के लिए लुक फॉरवर्ड करेगा? टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म इज व्हाट वी सही बात आइडेंटिफाइड एज इम्पोर्टेंट। राइट एंड ये प्लेटफॉर्म जब हमने प्रोवाइड किया अक्रॉस राजस्थान, many players got shortlisted for the zonal rounds, हम्म and that's when we realized कि हाँ ठीक है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे तो बच्चा आगे तक जाएगा। एंड एटलीस्ट इवन दे विल हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू कि हाँ यार, राइट ये ट्रायल होता है, आई मस्ट प्रिपेयर फॉर दिस। अगर मुझे प्रोफेशनली आगे बढ़ना है फुटबॉल में तो आई कैन डू दिस। सो राइट नाउ दे हैव अ पाथवे टू गेट इन टू द फील्ड। एंड या आई मीन सिमिलरली, ये तो चलो एक एक्सपीरियंस हो गया। And while these experiences kept on building over हम्म time, over these 4 seasons, I learned a few very important things. Again, I like to like break it up into three different segments. हम्म So while you are working with an organization like India Khelo Football, हम्म it's important that you have a good team in place. ट्रू By good team I mean responsible team, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, जिनको पता है क्या करना है। तुम्हें एक बार बता दिया, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज व्हाट आई हैव टू डू टू इंश्योर कि ये सस्टेन करे। राइट सो so the team is very important, and similarly, luckily, we have a very good team. We have our technical head Nimish, we have our communication person Sanskriti, we have operations manager Siddhi, I'm the operations head. We have amazing co-founders who work day and night to make this हम्म vision sustain. We have a good sponsorship partnership team, and thankfully great network of scouts who राइट are placed out in different parts of India. And we have a great administrative head Suri Babuji. So this is what I identified कि मतलब मैं अगर जाके कहीं ट्रायल कंडक्ट कर लूं तो उससे तो कुछ होगा नहीं। There राइट should be a process for assessment, a process of analytics of these videographies हम्म of the matches. हम्म कोई प्रॉपरली एनालाइज कर रहा है, कोई ये डेटा मेंटेन कर रहा है, राइट कोई प्लेयर्स को कम्युनिकेट कर रहा है, कोई पेरेंट्स को समझा रहा है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। तो ये सब, these things are very important इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि आपके साथ जो आपकी टीम है वो कैसे पूरी ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम को सस्टेन कर रही है एंड प्रोसेसेस को फॉलो करवा रही है। राइट सो टीम वाज वन बिट ऑफ इट, एंड
like I said, the other aspect is definitely the processes that we set over these 4 seasons, the SOPs we followed. And the most important bit is that uh, the collaborations, the partners Hmm. that we have had over these 4 years. So, India Khelo Football, definitely we have a team. We are very thankful that currently we have a very strong team. But it's a team who's operating in different regions, but it's a very tiny team. True. And now our operations is something that goes to around 100 cities. Like initially Hmm. in season one, it was 17 cities. Next, we went to 28 cities, then 58. And this season, we are going to 100 100 cities. cities, yeah. So it was very important that we find some regional execution partner Right. who share, again, a similar vision of making sure that the football ecosystem is growing, uh, and they are actually connected with grassroots, so they know Hmm. उनके local region में क्या requirement है and what Right. is that can actually sustain Indian football ecosystem. So it was important for us to find those people जो Right. actually ये बड़ा change लेके आने वाले हैं, and hence we started collaborating with anyone who shares the similar vision, and जिनको actually दे नो कि ये प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी नहीं है, दे आर Hmm. देयर फॉर जस्ट सपोर्टिंग द इंडियन फुटबॉल इकोसिस्टम. Right. सो ये बड़ा ही क्लियर था, इवन इवन from the inception of India Khelo Football, even with the partners that we have around 58 regional execution partners in this Hmm. season, Hmm. and many from the past season as well. So yes, I mean, ये lessons हैं which we developed over these 4 years कि क्या जरूरी है, क्या important है, and definitely relationship and communication is something that I have realized is important. आप अगर आपको पता है, आप क्लियर हो कि ये मेरा थॉट प्रोसेस है, मुझे यही करना है, मैं डेविएट नहीं हो रही हूँ अपनी बात से, एंड सामने वाला लाइक माइंडेड पीपल को ये थॉट प्रोसेस समझ आ गया, he will get attracted to your vision. Right. It's as simple as that. Only thing is, unka mindset, it should be on somewhere on the similar lines. That's it. Right. Interesting. काफी इंटरेस्टिंग बातें बताई है, एंड आई थिंक फॉर समवन हु इज डूइंग अ स्टार्टअप, I mean, in general, for them, it is very interesting to understand why team is important, why communication is important, and why like-minded people are Yeah. important. So, चलिए अब move on करते हैं next question पे, which is very important, and I keep on talking about this, is women in sports, right? So you have been in a male-dominating industry. It's a fact, and you have worked hard to reach here. मैं चैलेंजेस की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा कि लड़कियों में या विमेन जो हैं हमारे स्पोर्ट्स खेलते हैं, वो एक बार इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद ना वो एक स्टक हो जाते हैं. लाइक आई कीप ऑन टॉकिंग विद सो मेनी कोचेस एंड women coaches and women players who are playing football for like 8-9 years and all. And फिर उसके बाद उनको मोटिवेशन या फिर उनको इंसेंटिव्स प्रॉपर नहीं मिलते, तो मतलब दे लूज देयर होप, वो छोड़ देते हैं. तो मैं उनके लिए उनकी तरफ से ये जानना चाहूंगा कि, और मैं ये सवाल बहुत पूछता हूँ, तो मैं उनकी तरफ से ये जानना चाहूंगा कि आप क्या उनको एडवाइस देना चाहते हैं, एंड हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन दिस, गिवन द फैक्ट कि इंडिया में अभी भी बहुत सारे सिटीज में या गांव में, छोटे मोटे शहरों में लड़कियों के पेरेंट्स और फैमिली और रिलेटिव्स का माइंडसेट थोड़ा सा अलग होता है. इट्स नॉट प्रोग्रेसिव, इट्स नॉट डेवलपिंग. तो उनके लिए आपका क्या, यू कम फ्रॉम अ आर्मी बैकग्राउंड, सो आई अंडरस्टैंड कि वो क्या आपको सपोर्ट बहुत मिला होगा. बट फॉर अदर गर्ल्स who don't have that background, they are just going and doing it for the passion, for the cause, उनके लिए आप क्या solutions या advice है? सो आई थिंक सिद्धार्थ, आप जो बोल रहे हो ना, मैं पर्सनली उससे रिलेट नहीं कर पाऊंगी, बट Yeah. विथ माई एक्सपीरियंस, Yeah. जितना मैंने देखा है, चैलेंजेस डेफिनेटली होता है. एंड आई वुडंट से कि ये चैलेंजेस मैंने फेस नहीं किए या किसी Hmm. और ने नहीं. हो सकता है किसी मेल ने भी सेम चैलेंजेस फेस Of किए होंगे, course. आई एम सर्टेन अबाउट दैट फैक्ट. Of course. बट अगेन,
इट हैज बिन वेरी सिंपल फॉर मी। अगर कोई भी कोई कोई पैशन है दैट यू नीड टू परस्यू, बी अ मेल बी अ फीमेल, you have to roll up your sleeves, you have to dive into, just dive into it। मतलब कुछ भी हुआ, इंटर्नशिप ले लो। आप देखो कि आप एज अ कोच हो, बट अभी एज अ कोच यू डोंट फील कि ये फुलफिल कर पा रहा हूं मैं या कर पा रही हूं मैं एज एज अ प्रोफेशन। यू आइडेंटिफाई कि क्या है जो आपके लिए वर्कआउट करेगा। मतलब मुझे पता था कि आई नो व्हाट आई वांटेड, सो इट वाज हम्म वेरी क्लियर फॉर मी कि हाँ कैसे करना है इज व्हाट आई नीड टू आइडेंटिफाई। Abhi, for any female who's there in the industry and who's facing any kind of challenge, कि how to probably challenges कि ढूंढू कैसे कि कहाँ जाना है या कैसे इंटर्नशिप फाइंड करनी है, या फिर हो सकता है कि अरे अभी दिस दिस जर्नी समथिंग ये तो चेंज करनी पड़ेगी, नाउ आई डोंट नो हाउ टू डू इट। हम्म सो देयर इज नो सेट पाथवे फॉर दिस। हम्म लाइक आई सेड कि challenges होंगे फॉर हम्म श्योर, बट यू नीड टू आइडेंटिफाई कि where exactly or what exactly is that you want to do। उसके बाद इट्स जस्ट गेटिंग इनटू इट। अभी फॉर एग्जांपल मैं बैठ के ये सोचूं कि चलो मैंने एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की डिग्री कर ली है, इसके बाद मुझे सीधा जॉब मिल जाएगी कॉलेज के थ्रू। इट डजंट वर्क लाइक दैट। हम्म it doesn't work like that। You have to make sure you are giving your best। हम्म You are actually attached to the ecosystem where you want to work, हम्म हम्म and rather you are there to identify कि अगर ये मेरे लिए अच्छा है और मैं ये परस्यू कर रही हूँ, तो डेफिनेटली इवेंचुअली आपका वर्क विल स्पीक फॉर इटसेल्फ। राइट एंड टू आइडेंटिफाई रादर कि यू नो कि क्या एग्जैक्टली बड़े चैलेंजेस हो सकते हैं जो आपको हैम्पर करें या जो आपको स्टॉप करें टू परस्यू योर गोल और विजन। बैक सीट पे बिठाओ उनको यार, आई मीन कैसे होगा ऐसे? जस्ट जस्ट फॉरगेट द वर्ल्ड, जस्ट फॉरगेट द आइडिया ऑफ बीइंग स्टॉप्ड बाय एनीवन। हम्म जस्ट follow your passion, and believe me on this, whenever you are following your passion you will always find a way। हम्म and good thing is that, for example, in an organization like India Khelo Football, um, हमारे कोई भी जॉब प्रोफाइल्स जो कभी भी बाहर जाते हैं फॉर हायरिंग, इट्स नेवर मेल सेंट्रिक or female centric, rather we ask anyone and everyone to apply। who's passionate and for for football. us, yeah, very clear, check box, passionate for football, done, you can come on board। so so same, I think, even for any, again, for female or for male, I would say ki work into it, let your Hmm. work speak what you have been doing, what you Hmm. are doing, Hmm. and believe me, it will do wonders for you। Right. I think what I have seen, जो मैंने यहाँ पे छोटे शहरों में या दूसरे गांव में आसपास के लोगों में देखा है कि they are not able to find those opportunities since you are aware of a lot of things you have studied, तो वो चीज़ मिसिंग है। and that's why we also keep pushing people to study। बहुत सारे बच्चे होते हैं बोलते हैं कि मेरे को सिर्फ खेलना है, मेरे को पढ़ाई नहीं करनी है, आई डोंट वांट टू लर्न और स्टडी, सिर्फ खेलते रहना है खेलते रहना है। तो हमारा भी एक पुश रहता है कि नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट, राइट? एंड साइंस एंड नाउ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज अ बिग टर्म। तो क्या आपको लगता है कि ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऐसे रन कर सकते हैं हम छोटे छोटे शहरों में या गांव में, और उनको समझाया जा सकता है कि स्पोर्ट्स के साथ आप कैसे एजुकेशन भी परस्यू करें एंड कैसे अपना करियर आगे सस्टेन करें? अगर आप फुटबॉल में या फिर कोई भी स्पोर्ट्स हो उसमें नहीं करियर बना पाए, लाइक एज अ प्लेयर और कोच, देन देर आर अदर एरियाज एज वेल। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? So I think that's a very good question actually, Siddharth. Like even I thought about it कि opportunity है, ये कैसे पता चलेगा? So again, I'll quote something from our organization, the process that we have been following। So हर सिटी में जहाँ पे भी हम जाते हैं, we hire anyone who's local, क्योंकि हम्म हमें पता है हम बूटस्ट्रैप मैनर में काम करते हैं, वी आर अ नॉन राइट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो वो कॉस्ट रिड्यूस तभी होगा जब आप एक लोकल पर्सन के साथ मिलके काम कर रहे हो। एंड अभी के लिए करंटली हमारा मेन मेथोडोलॉजी इज वाया इंस्टाग्राम और वाया फेसबुक
क्योंकि हम्म, ये वी फील कि सोशल मीडिया चैनल इज समथिंग जो एटलीस्ट काफी लोगों तक अभी तक पहुंच चुका बहुत है. ज्यादा राइट. एंड द सेकेंड थिंग इज कि जो हमारे लोकल पार्टनर्स होते हैं, वी आस्क देम टू स्प्रेड द वर्ड कि हम ऐसा ऐसा इवेंट कर रहे हैं. हम्म, एंड इस इवेंट में वी हैव दिस काइंड ऑफ, फॉर एग्जांपल अभी मुझे एक सोशल मीडिया वॉलंटियर चाहिए जो उस दिन मुझे हम्म, इवेंट के लाइव फोटोज क्लिक करके दे सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट वी वांट टू शूट, वो उनको हम बता पाते हैं. सो टेक्निकली क्या होता है ना कि एट दैट ऑन द डे ऑफ ट्रायल, उस उस पर्सन को पता है कि हाउ टू मैनेज अ सोशल मीडिया और हाउ टू गेट कंटेंट फॉर सोशल मीडिया, या फिर एक तरीके का स्किल डेवलपमेंट हो रहा है. राइट. So while we are providing a platform to the players, at the same time we are हम्म, providing a platform इंटरेस्टिंग. to the local uh, या kids as in अभी 17 के या ऊपर 18 के लोकल ऊपर ही पीपल लेना पड़ता है. या टू But गेट दैट स्किल राइट. exactly, so we या. try to get them engaged in our process. हम्म, अभी हम्म, फॉर एग्जाम्पल ये तो एक चीज थी. अभी ऑपरेशंस के लिए भी कोई चाहिए हम्म, तो वी हैव आवर रीजनल एग्जीक्यूशन टीम, हम्म, बट वी ऑलवेज कीप दिस ओपन कि किसी हम्म, भी तरीके का कोई भी वॉलंटियर आके हमें हमारी सपोर्ट कर. ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर सकता है. अभी आप राइट. फॉर एग्जाम्पल हजारीबाग के किसी रीजन से हो हम्म, एंड यू सी अ पोस्ट कि हाँ ठीक है यहाँ पे एक ऑपरेशंस पर्सन की रिक्वायरमेंट है, तो यू जस्ट डायरेक्टली, मतलब वो प्रोसेस भी इतना सिंपल है. यू जस्ट कॉन्टैक्ट विद अस और आवर हम्म, रीजनल एग्जीक्यूशन पार्टनर एंड वी हम्म, विल टेल यू, वी विल ट्रेन यू व्हाट नीड्स टू बी डन. So again, like there are two things. One is word of mouth, and the second thing is our social media channel that keep हम्म, people updated कि अब हम कहाँ आ रहे हैं next, या क्या राइट. होने वाला है, या what are the requirements. हम्म, तो this is how we have been trying to solve out this problem. इंटरेस्टिंग. And I think it has worked so far because काफी local connects Interesting. we Yeah, have I developed think over these that's very years. interesting insight. I mean, to engage people in the process so that they can explore other opportunities or more opportunities in the sports. That's very important thing. And I think ये अभी तक highlight नहीं हुआ था, but now we'll make a separate content on this क्योंकि ये लोगों को जानना जरूरी है कि हर कोई कोच या प्लेयर या फिर प्रोफेशनली नहीं कर सकता है. बहुत ही Exactly. कम लोग जा सकते हैं given that there is a lot of competition and hard work plus the incentives are low. तो it's not necessary कि सिर्फ आप एक ही जगह देखें. You have to explore other options and for that you have to get involved into the operations of the entire sport ecosystem. So that's very great work that IKF is doing, I think. And I mean, thanks for bringing this point. And I hope लोगों को थोड़ा सा इससे सीख मिला and more people get attached to you. Also, I hope you get more passionate and driven people in the organization. So now, coming to another question, what's your vision for the next season? You have now like season 4, 100 cities, so many scouts, so many interesting stories, inspiring stories. Now, what's your next step for the season 5? Because uh, I know your day-to-day job is very hectic. You have to live today's life, but then you have to plan for tomorrow's day as well. So, what are your plans and what are your vision for next season? So, like I said, Siddharth, I think our national final is scheduled for 26 Hmm. January, Hmm. and our season 5 is kickstarting from 27 January itself. Oh. So we don't want to waste any time. We are very clear कि अभी बच्चों का मैसेज आना चालू हो जाएगा कि when is हाँ, our next हाँ, season. हाँ, सही बात है. एंड ऑनेस्टली अभी हमारी जो ऑपरेशंस टीम है, संस्कृति, लाइक माय टीममेट्स, माय कलीग्स, संस्कृति, आर को फाउंडर्स, सिद्धि, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद द सीजन 5 प्रेपिंग. मतलब so that, why I'm telling you this is because ये it's an activity that requires a lot of efforts, हम्म, thinking through, to identify कि क्या नहीं किया या क्या होना चाहिए था, एंड हम्म, हाउ वी नीड टू इम्प्रूव इट इन द हम्म, नेक्स्ट सीजन. हम्म, सो ये एक एक्टिविटी होती है जो थ्रू आउट द ईयर चलती रहती है. हम्म, एंड वी जस्ट इंश्योर कि अभी नेक्स्ट सीजन है तो क्या चेंजेस होने चाहिए. सो लाइक यू सेड, अभी सीजन 4 में 100 सिटीज हुई. सो क्योंकि हम लोग तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है,
our idea is to again make sure कि ये platform accessible रहे throughout the year to the players, क्योंकि we know कि एक financial barrier shouldn't be there for any player to stop coming or follow or pursue the passion, क्योंकि एक financial barrier था उसको. So Right. ideology will remain the same. हाउ टू इम्प्रूव इट और हाउ टू मेक श्योर कि ये ऑर्गेनाइज एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम लोग सेल्फ सस्टेन रहे, हम लोग ये Hmm. प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते रहे. सो इट्स इम्पोर्टेंट दैट द ब्रांड्स एंड द strategies, for example, Tiger Capital is someone Hmm. who came on board for season Right. 4, Right. and they supported us to make sure that the initiative goes to 100 cities and villages. Hmm. Similarly, on next season we are planning to go to 125 cities and villages Hmm. and scout more and more talent, and to provide this platform to as many players as possible. I really hope that next year we are able to scout at least or assess around 20,000 plus players pan India. Wow. So to ensure this, we have our brands and partnership headed by Mr. Hitesh Joshi. Hmm. So we are again looking for like-minded, Hmm. visionary brands who Hmm. can sustain us Right. for the next season, who Yeah. can help us out getting this platform out there to the players who genuinely need it, and to make sure कि the operations and the scale of the believe me on this, मतलब ये तो एक अलग ही पॉडकास्ट बन Hmm. सकता है, वो इतना इन डेप्थ वो है. तो हाँ, so I think ये सब करना, it's not a one person job. Good Hmm. thing, like I said, we have a good team in place who have been working honestly day and night to make sure, मतलब मेरे कुछ टीम मेंबर्स है, they don't even take Sundays off, क्योंकि Wow. सैटरडे संडे तो ट्रायल होता है. Hmm. So you can't really Right. find time to for yourself, and Right. it is, but at the same time ये अभी भी sustain इसलिए कर रहा है because we are passionately pursuing it, Right. because we believe in the cause, because we know if we don't do this, I don't know who will. Yeah. So it has been very clear for us since inception of IKF कि ये प्लेटफॉर्म तो प्रोवाइड करना है भाई, कैसे करना है वो देखा जाएगा, पर करना है. And Right. same goes for season 5. We'll be there, we'll be working day and night to make sure कि ये 125 city hunt बढ़े, and उतने ही प्लेटफॉर्म, मतलब ये प्लेयर्स को वो प्लेटफॉर्म मिले, एंड असेसमेंट और बेटर हो, Hmm. or player scout who we are able to onboard more ISL league clubs and academies for the next season. We get more brands to support us. We improve our processes in any possible way that we can. We connect with more regional execution partners. So that's the idea, and it's majorly about the scale of the operations. Interesting. So I wish you the best for the next season, and we will always support you. Our channel will always support you. In fact, we will be making few separate content separately for IKF, where we can promote awareness, and so that you can reach to right people, like-minded people, and good teams, good regional execution partners, so that your process is smooth and we get to see better players, interesting players, and see the level of Indian football going up. So, That's thank you very that's much actually for, wonderful. No, yes, honestly, I mean, I would really appreciate if we can start something like this where we can cover stories about the regional exactly. execution partners that we have. They believe me on this, Siddharth. Like I said, it's a brief podcast. अगर मैं स्टोरी सुनाने जाऊं और रीजनल एग्जीक्यूशन पे आऊं ना, तो मतलब शायद एक साल भी निकल जाए, इतने स्टोरीज हैं हमारे साथ. एंड आई वुड जेन्युइनली लाइक फील कि जो आरईपीज हैं उनकी स्टोरी इज समथिंग दैट शुड एक्चुअली कम अप Hmm. फ्रंट, एंड क्योंकि they know the reality of the Indian football. They have been working over Hmm. grassroots football for so many years, and they actually communicate, and they are in touch with the local people. कैसे डेवलप करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, नेक्स्ट ईयर क्या इम्प्रूव करना चाहिए, Right. प्लेयर्स से टच में है. लाइक जो प्लेयर्स अभी भी प्ले, फॉर एग्जांपल मेनी प्लेयर्स हैव बीन प्लेस्ड, बट जैसे थॉमस करके एक प्लेयर है Hmm. हु गॉट रिसेंटली प्लेस इन बीएफसी, सुनील हसदा जो झारखंड से Hmm. प्लेस हुए थे Hmm. इन एफसी मद्रास. तो जब आप उनके कोचेस की स्टोरी सुनोगे ना, लाइक मतलब व्हाट दे हैव गिवन इनटू इट, कि कैसे ये बच्चा वहां तक पहुंचा है. तो प्लेयर की जर्नी तो एक होती है,
बट वो जो Coaches. हमारे पार्टनर्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, Yeah, दे हैव एन इंसेनली पैशनेट जर्नी टुवर्ड्स मेकिंग right. श्योर कि ये बच्चा वहां तक पहुंचे. Right. I सो mean, the sacrifice that they have done is something which या is never covered across any platform or is never shown to any people, normal people. So I think that's very interesting. And probably in the next session, we can talk about maybe such highlights of the REPs and showcase their work as well, because this is really interesting topic that you're doing and how we can at least give them some credit, right? So that's great, and it was really nice talking to you. It was a insightful conversation. I hope it is very insightful for our viewers and listeners, and they can come out and support you in any manner. Thank you very much for giving your time. It's a pleasure talking to you, Nija. Thank you very much. same here, Siddharth, and I feel honestly blessed for having this session where I could make sure that ये platform के बारे में और लोगों को पता चले, so that Yeah, more people can get yeah, associated with us. And always thanks to you for bringing out the stories from India Khelo Football and what we have been doing so far. And I really hope that ये through these things awareness और ज़्यादा बढ़े, yes, rather yes. rather like football grow करे. That is all we wish for at the bigger picture. So yeah, Siddharth, I hope to connect with you soon again. Yes, And of course. किसी भी तरीके का किसी को भी requirement हो Yeah, after listening to this podcast, they yeah, can always connect with us via our Instagram channel, yeah, India yeah. Khelo Football, or can mail us. Our IDs, our phone numbers are there on the Google. Okay. So yeah. Perfect, perfect. So we'll also make sure that they can reach out to you quickly on the DMs or on the emails and the contact. We will highlight that in the reel. And all the best, Nisha. Thank you very much. Thank you. Thank you.